हर शहरी का हक बनता है कि वो वोट का इस्तेमाल करे और जिस जमात को भी वोट करे उसका हक है कि इस मुल्क पर हुक्मरानी करे। हम सिर्फ ये कहते हैं कि आज जो है ये तासुर दिया जा रहा है कि हमारे जो सिविलियन इदारे हैं वो इस वक्त शायद न्यूट्रल नहीं हैं। हमारे ऑनरेबल का जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म हैं उनको इसकी तरफ देखना पड़ेगा। हम ये कहते हैं कि 2017 या 18 में जो चीज़ PTI के चेयरमैन के लिए गलत थी वो आज मेरे लिए भी गलत है और किसी और के लिए भी गलत है। जब वज़ारत ख़ारजा से एक हाई कमिश्नर एक साबिक वज़ीर आज़म को सी ऑफ करेगा लंदन से और पंजाब में सिविलियन इदारे उनको एक आप प्रोटोकॉल कहें या सहूलतकारी कहें वो करेंगे तो सवाल निशान उठेंगे। क्या वही चीज़ उस साबिक वज़ीर आज़म के साथ हो रही है तो 5 साबिक वज़ीर आज़म इस मुल्क में और भी घूम रहे, क्या उनके साथ भी हो रही है? तो हम कहेंगे बराबरी की बुनियाद है। अगर नहीं है तो फिर हम समझेंगे कि ये सहूलतकारी हो रही है और इस पर निगरान वज़ीर आज़म को देखना पड़ेगा। जब गवर्नर हाउस में पंजाब की टिकटों की मीटिंग होगी, पंजाब के गवर्नर हाउस में बावलपुर डिवीज़न की मीटिंग होगी तो सवाल तो उठेंगे कि क्यों हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को माजी में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 88 में भी डिक्टेटर के मुकाबला किया, मुशर्रफ का भी मुकाबला किया, 2002 में हमारी पार्टी को बैन किया गया। उसके बाद हम फिर भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने, फिर नैब को इस्तेमाल करके पेट्रियट बनाई गई और कोशिश की गई कि किसी तरीके से हमारी हुकूमत ना बने। लेकिन हमने लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद भी हमने हुकूमतें बनाई, चाहे वो मोहतरमा शहीद की हुकूमतें थीं, चाहे हमारी जब 2008 से 13 तक हुकूमत थी वो हमारी हुकूमतें थी, वो हमने लेवल प्लेइंग न फील्ड ना होने के बावजूद बनाई। हमने हर पिच पे हमारे पार्टी के वर्कर जो है वो खेल सकते हैं और इंशाल्लाह हम खेलेंगे। लेकिन हम सिर्फ ये कहते हैं कि मियाँ साहब का जो बयानिया था लंदन में जब वो होते थे और PDM की मीटिंग्स होती थी और जलसे होते थे, जिसमें वो कहते थे कि वोट को इज़्ज़त दो, मुझे क्यों निकाला, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, और कहा था जिन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की है मैं उनको गिरबान से पकड़ूंगा। वो बयानिया पाकिस्तान आते ही ख़त्म हो गया। जो उनका ज़ाती मसला था वो उनका अपना ज़ाती मसला है, उन्होंने माजी को छोड़ा और मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये जो 3 चीज़ें थी ये तो आवाम से रिलेटेड थी, जिसमें वोट को इज़्ज़त दो, मुझे क्यों निकाला, एंड फेयर इलेक्शन। पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने ये बयानिया ख़त्म कर दिया। मैं तो नहीं सुना, कम अज़ कम अगर आप दोस्तों ने सुना होगा तो शायद मुझे अगर अपडेट कर लें तो मैं मान लूँगा। लेकिन जो लोग कंपैरिजन कर रहे थे मोहतरमा शहीद की वापसी का और मियाँ नवाज शरीफ की वापसी का, उनको सिर्फ मैं ये बताता हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद एक डिक्टेटर को ललकार के लाहौर आई थी और आपने देखा था कि उनके पास कोई सरकारी वसाइल नहीं थे, कारी इदारे ने उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन करके लोग नहीं लाए थे। लाहौर में जलसा तो एक मीनार पाकिस्तान पे जिस तरीके से था हो गया मियाँ साहब का, लेकिन उसके बाद वो पंजाब में निकलने से कासिर हुए। फिर उन्होंने कराची से मेहमान बुलाए, उनका रुख किया, फिर वो ख़ुद बलूचिस्तान गए। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हर किसी का जमहूरी हक है इत्तेहाद बनाने का। जो लोग कह रहे थे हम पंजाब क्लीन स्वीप कर रहे हैं, उन्होंने तो आज तक पंजाब में एक कन्वेंशन नहीं किया, अवाम में मौजूद नहीं है, अपना बयानी अवाम में नहीं लेके जा रहे हैं। और वो सबसे पहले उन्होंने, हम कहते हैं, वो सलाम उस पर डाला जिनके ऊपर जब हमने उनको इत्तेहादी बनाया, उन्हें हमें वोट किया तो उनके मुतालिक उनके क्या ख्यालात थे। जब बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट किए थे तो अब मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा और उनकी लीडरान की तकारीर आज उठाएं कि उन्होंने क्या कहा था। चलो हम मान लेते हैं, ना मानते भी मान लेते हैं कि आपने जो कहा था अगर वो सच है तो आज वही बात सच है कि आज उसमें कोई यू टर्न भी है। तैयारी शुरू कर दी है हमने, अभी थोड़ी देर में ही सेक्रेटरी इन्वायरमेंट और मिनिस्टर इन्वायरमेंट और कमिश्नर लाहौर जो हैं उसके लिए जा रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह उसके लिए भी कोशिश करेंगे कि हम अगर पॉसिबल हुआ तो वो रेन कर लें। मार्केट्स हम बिल्कुल बंद करने के हक़ में नहीं हैं, इसलिए हम ये फ़ैसला कर रहे हैं कि मार्केट्स फ्राइडे और सैटरडे को 3 बजे खुलेंगी और रात तक वो खोल लें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन 3 बजे खुलेंगी।
किसी बिजनेसमैन का किसी का हम नुकसान नहीं चाहते, लेकिन इस टाइम माहौल के हिसाब से उनको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। फ्राइडे वैसे ही जुमे का दिन होता है, तो हम संडे को पूरी मार्केट्स हर तरह की वो क्लोज़ होगी। वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स तमाम 6 डिवीज़न में इंश्योर करेंगी कि संडे को हर तरह का कारोबार बंद हो। रेस्टोरेंट्स भी इस तरह 3 बजे फ्राइडे सैटरडे को खुलेंगे। ऑफिसेज फ्राइडे को खुले रहेंगे, लेकिन सैटरडे को 3 बजे के बाद वो खोल सकते हैं, सुबह में वो ना खोलें। क्योंकि आप लोगों ने नोट किया होगा कि AQI लेवल जो है वो सुबह में ज़्यादा होता है, दोपहर में वो कम हो जाता है। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको तोड़ लें। उसके बाद हम जो सड़कों पे पानी का छिड़काव कर रहे हैं वो भी डबल करने का फ़ैसला किया है। उसके लिए लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन, वासा, PHA, LWMC मिल के इसको आज से शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। और आखिरी चीज़ एक सिंबॉलिक चीज़ है, लेकिन सबका फ़ैसला है कि संडे के दिन मार रोड सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक साइकिलिंग के लिए होगी। सिर्फ मेन मार रोड उससे गुजर सकेंगे साइडों से जो उसको क्रॉस कर रही हैं, लेकिन मेन मार रोड सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक सिर्फ साइकिल वालों के लिए खुली होगी। बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आप कह रहे हैं कि मतलब हमारे दबाव पे काम हो रही है चीजें। मतलब एक जमाने में शहर में सिर्फ MQM का दबाव था, कभी बोरियों का दबाव था, कभी तो मैं खुशी हो रही है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट सेक्टर की तंजीम दिल मोहम्मद साहब कहें कि इतने पावरफुल है, इतने तगड़े हैं ये लोग माशाल्लाह कि इन्होंने सबको मुंह दे दिया है। मैं तो इस पे कॉम्प्लीमेंट चाहूंगा, और यही कराची तब्दील होते हुए नजर आ रहा है कि लोग देख रहे हैं कि ताकत का मंबा जो है ना वो अवाम है, खौफ नहीं है, दहशत नहीं है, और अवाम की तर्जुमानी जो है वो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी करेगी। मैं इस बात को वाजे करना चाहूंगा, मैं इंतजामी उमूर में मदाखलत का कायल नहीं हूँ। मैं ट्रांसफर पोस्टिंग में खुद भी बिलीव नहीं करता। आपने इस चीज की निशानदेही की है, मैं इस चीज को चेक कर लूंगा। चेक जो कराची की आवाम, डिस्ट्रिक्ट सेक्टर की आवाम के मफाद में फैसला होगा ना, इंशाल्लाह वो फैसला किया जाएगा। मैं मशावरत जरूर करता हूँ, लेकिन मशावरत के साथ मैं मदाखलत में बिलीव नहीं करता। मैं चेक कर लेता हूँ, चेक करके आपको जवाब दे दूंगा इसका। इससे पहले भी सियासी था। ये किसके रहनुमा कह रहे? नून कह सकते। बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PIA की मुलाजमीन के शाना बशाना खड़ी है, और हम PPIA की मुलाजमीन को तनहा नहीं छोड़ सकते, उनका चूल्हा नहीं ठंडा होने दे सकते, और हम उनके साथ बाकायदा राब्ते में हैं। और हम ये चाहते हैं कि उनके जो है उनका मुस्तकबिल जो है वो महफूज हाथों में हो। यही कुछ गुजारिशात थी। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमने पहले भी कहा और आज भी कहा कि वाहिद जमात है कि जो आवाम में मौजूद है। हम आवाम में गए हुए हैं, हमने भी 6 कन्वेंशन किए, उससे पहले थर में जलसा किया। और बाकी जमातें इस वक्त जो है वो बैसाखियों की तलाश में हैं। कभी MQM की बैसाखी, कभी बलोचिस्तान अवामी पार्टी की बैसाखी, कभी खैबर पख्तूनख्वा में बैसाखियाँ ढूंढ रहे हैं। उनका जमहूरी हक है, वो बैसाखियों के ज़रिए हैं, लेकिन आने नहीं देंगे। वोट की ताकत आवाम के साथ है। इलेक्शन शायद उनकी मर्ज़ी के मुताबिक डेट हो, लेकिन अंगूठा जो है जिसने लगाना है वो आवाम के पास है। वो आवाम के वोटों के ज़रिए आना है, किसी के ज़रिए नहीं आना। हम कहते हैं अगर आपने चौथी दफ़ा भी ये जो है नज़रिया देना है कि आप सेलेक्ट होकर आ रहे हैं या आप लाडले होने, अब ने एक लाडले को तो भुगत लिया जिसने तबाही कर ली, अब दूसरी तबाही की तरफ क्यों जा रहा है? आवाम के पास जाए। अगर आवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहती है कि हमने आपको वोट नहीं करना, हम अपोजिशन में बैठने को तैयार हैं। अगर आपको भी अगर आवाम वोट नहीं करती या करती है, जो भी है, हमें आवाम के फैसले मानने चाहिए। हमें बैसाखियों की तरफ और दाएँ बाएँ नहीं देखना चाहिए, हमें सीधा देखना चाहिए। और आवाम के पास ये ताकत का सरचश्मा आवाम है। तो यही मेरी कुछ गुजारिशात थी, क्योंकि हमारे एक हफ्ते का विजिट था खैबर पख्तूनख्वा का, उस पर मैंने आपको अपडेट करना था। अब सवालात हैं। एजाज साहब पिछले 5 मिनट से जो है हाथ खड़ा किया हुआ इन्होंने। खुदा करे। दोस्तों में बांटने की कोशिश हो रही है, जिस पर आप पीपल्स पार्टी असल सूरत अगर मुमकिन है तो बता सकें। दूसरा, ये बड़ी तेजी से ये खबरें भी चल रही है कि पीपल्स पार्टी जो है वो साबिक इत्तेहादियों को छोड़कर अब PTI से इत्तेहाद करना चाहती है। तो क्या PTI से पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद मुमकिन है? मैं समझता हूँ कि दूसरे सवाल का पहले जवाब दे दूँ।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई इरादा नहीं है कि वो PTI से इत्तेहाद करे। हमारा कोई बात की बात है, कितनी सीट्स होती हैं उसके मुताबिक फिर फैसला। हमारा कोई न PTI के साथ राब्ते हैं न बैकडोर राब्ते हैं। हाँ, फ्यूचर में अगर नंबर गेम आती है, उसमें अगर पार्टी लीडरशिप दोनों की अगर ये करती है कि अगर ऐसे कोई गेम बनती है तो फ्यूचर के मुतालिक मैं नहीं कह सकता, लेकिन इलेक्शन अलायंस इसके मुताबिक हमारा इस वक्त PTI के साथ कोई वो नहीं है। आज इलेक्शन कमीशन ने PTI के गालिबन इंटर पार्टी इलेक्शन को भी नल एंड वॉइड करार दिए हैं। पहले PTI मैं समझता हूँ कि उनके जो 9 मई के वाक़यात में जो मुलव्वस हैं उनका फ़ैसला अदालतें कर लें, और उसके बाद कुछ PTI में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। अगर उनको इलेक्शन कमीशन ने इजाज़त दी इलेक्शन लड़ने की और वो पार्लियामेंट में आते हैं तो फिर पार्लिमानी सियासत में फिर देखा जाएगा कि हम क्या करते हैं। जहाँ तक PIA की बात है, सुनने में आ रहा है कि मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं जिनके एक मखसूस पार्टी से ताल्लुक़ है और वो वहाँ पर आके सर्वे कर रहे हैं कि ये चीज़, वो ऐसे लग रहा है जैसे तकसीम हो रही है कि फ़लाँ कह रहा है ये मेरा हिस्सा, फ़लाँ कह रहा है मेरे हिस्सा, रेवड़े बांट रहे हैं। भाई पाकिस्तान के असासे हैं, ये किसी ज़ाती वो असासे नहीं है। और एक सोचे समझे मंसूबे के तहत PIA में रोज़ाना TV में ये बताया जाता है, आपके चैनल्स पे हम देख रहे होते हैं, आज फ्यूल नहीं है, आज ये नहीं है। जानबूझ के लोगों को ब्रेन वॉशिंग की जा रही है कि PIA इतना तबाह हो चुका है कि बग़ैर बेचने के इसका कोई वो नहीं है। आप अपने जो है इस चीज़ को जो है एक प्री प्लान्ड मंसूबे के तहत पाकिस्तान के असासों को बेच कर ज़ाती असासे बनाए जा रहे हैं। जी नूर सर, आपने कन्वेंशन की बात की, कन्वेंशन के निकात से पीपल्स पार्टी ने क्या खोया क्या पाया। और This half-hourly clock is brought to you by कोई हार्श स्मेल नहीं देती गोल्डन पर्ल हेयर ऑफ and इनवरेक्स सोलर एनर्जी, बिल की फिक्र से बेफिक्र। हमने कन्वेंशन में लीडरशिप, आप सिवाय कुछ जगहों पे सूबाई सदर साहब ने शायद स्पीच की होगी, बाकी हमने वहाँ पे लोकल लीडरशिप को मौका दिया। उन्होंने पार्टी पे तनकीद भी की, उन्होंने पॉजिटिव राइज भी दी, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कल्चर है कि वो जो है तनकीद भी सुनते हैं, तनकीद बरा इस्लाह भी करते हैं। चेयरमैन साहब की मौजूदगी में लोगों ने तनकीद भी की, इस्लाह भी की। हमने बहुत सी चीज़ें, हमने आज आप देखें कि हम वर्कर्स के अंदर मौजूद थे और वर्कर्स ने जो बातें की, हम आज है मौजूद है ना, हम क्यों कह रहे हैं कि हम इस वर्करों में मौजूद हैं। लोग कह रहे हैं हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ रहे हैं, डील हो चुकी है, मैच फिक्स हो चुका है, लेकिन अवाम में जाने से हम कहते हैं हमारी डील हो तो अवाम के साथ हो। अब वो अवाम में आने से, अपने होम टाउन है ना, होम, और कोई कहता है कि मेरा, हम कहते हैं हमारा होम जो है वो हम सिंध से बेस करते हैं, वो पंजाब से ना, तो जय कोई कन्वेंशन या जलसा तो करे ना, उधर से वो हैं और कह रहे हैं कि अब अगर वो ये तासुर दे रहे हैं कि आपकी डील हो चुकी है या मैच फिक्स हो चुका है, अगर वो तासुर भी दे रहे हैं तो फिर आप में और लाडले में क्या फ़र्क रह गया? उसकी सिलेक्शन में और आपकी सिलेक्शन में क्या फ़र्क रह गया? फिर आपने जो बयान जो लंदन में बैठ के कहा था, वो बयान फिर आपका गलत था। फिर आप आवाम की ताकत से नहीं आना चाहते, आप फिर दाएं बाएं देना चाहते कि हमें कोई सेलेक्ट कर ले। हमेशा PMLN ने इदारों को सियासत में घसीटा है, अदारे नहीं होते। उन्होंने तो पीछे आर्मी चीफ की पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंजी इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दूसरी जानिब निगरां वज़ीर IT उमर से खिताब कर रहे हैं। Degree awarding institutions to improve their quality so that what comes out of our universities is globally competitive. Pakistan also has a huge potential for domestically focused startups, which could be built here, could grow and scale, and then be replicated in similar countries. It has happened a little bit already with Pakistani startups expanding to the Middle East, to Africa. But we need to really step in and make sure that these startups get the funding and the enabling environment that they need. The State Bank, and it has come up earlier also, has done great work with RAST, with Russian digital accounts, with dollar retention accounts. Some of their policies have been very, very effective in moving things along. At this point, one of the important initiatives of the IT ministry is to start what we call the Pakistan Startup Fund. This, we struggled on how to put this together. We looked at Enterprise Ireland, we looked at YOSMA, we looked at SBIR, SBICs. There are various global models on how governments can step in to incentivize private risk capital, venture capital, to be invested in a Pakistani startup as opposed to a competing territory. So with the Pakistan Startup Fund, we have conceived it such that we could underwrite the risk by about 10 to 30% of an external venture capitalist putting money into Pakistani startups.
And imagine the opportunity here. This is a country where in the last 3 years, about $800 million have been invested in Pakistani startups. And some of this is from top-tier sandhill VCs. These are really world-class venture capitalists who've put money into these startups. And the opportunity is that not a single unicorn has happened yet. So while these startups, of course, have the promise and the ability to attract this funding, there is still an opportunity, which is just around the corner, for the next round of funding and the next round of funding to come in before they scale to become a unicorn. And we're going to try and enable that by this Pakistan Startup Fund, this new structure that we have set up, through which we can incentivize, through which we can catalyze, we can underwrite the risk of venture capitalists abroad to put money into Pakistani startups. One thing that hasn't been highlighted in this report as much as I would have liked to is this very interesting phenomena in Pakistan of what we call online freelancing. So while the enterprise has not scaled in this country because of poor regulatory environments, uncertainty, all of that, but because of the massive volume of talent that we've produced from our universities with young people, these young people didn't wait for us to start big companies, to give them job opportunities. Instead, they found out that they, while sitting in Pakistan, could work remotely on these micro-outsourcing tasks through platforms like Fiverr and Upwork and Crossover and Top Talent, etc. Where if you're a young man or a woman with skills and education, where you can do something substantial for someone sitting abroad, whether that's maintaining their ledger or designing a logo for them or doing a translation or designing a website or making a simple mobile application, people are willing to pay you between $10 to a few $100s a pop for each little task that gets outsourced to you. And these platforms, these online freelancing platforms, have had so many Pakistanis registered and productively working there that Pakistan is now the second largest online workforce in the world. Close to 1.5 million Pakistanis are registered on these platforms and doing little tasks in this gig economy from $5 a pop to a few $1,000s a pop. And that has actually generated substantial growth. We don't see that as easily into our remittances because instruments like PayPal and Stripe and Wise can't be used in Pakistan for reasons that totally escape me. For a country with the second largest online workforce, PayPal still can't be used in Pakistan for remitting money. Stripe refuses to start business here. That bewilders me. There is absolutely no logical explanation why that's not happening. We've gone around, we've knocked on these doors, and I continue to do that. And I continue to advocate, and I continue to lobby. And I hope that soon we'll be able to make that happen. But with instruments like PayPal and Stripe finally beginning to happen, the government recognizing the importance of online freelancers and providing facilities, funding, regulatory environment, and then also infrastructure through what we call the e-Rozgar program. Spaces, co-working spaces where these freelancers can come and work as part of this international gig economy, I think we could substantially enhance our exports. So while we work with IT companies, with the State Bank to make it easy for them to bring back their remittances to these dollar retention accounts, we work with these foreign companies to make it easy for freelancers to be able to get $5, $10 a pop for the work that they're doing for them through PayPal and Stripe. By investing in infrastructure like the e-Rozgar centers, and we want to create 10,000 of these, giving space to 1 million online freelancers to be able to show up and make an account on Fiverr and begin to make $10 to $30 a day. With 1 million people making $30 a day, that's $10 billion a year. That's just the potential of these young folks, currently working from their garage with a borrowed laptop. But if we gave them the environment, the infrastructure where they could come and productively be part of this global gig economy, I think that's the potential there. At this point, if you look at the IT exports of Pakistan, that's $2.6 billion a year, I think there and thereabouts. But if you look at it closely, this is the amount of money that these companies bring back to Pakistan so that they can meet their expenses.
This isn't their revenue, this is their expenses. Because bringing money back home was painful, taking it back to make expenses internationally was even more painful. Right? Holding on to this money was not without pain either, because of all the taxes and regulatory environment and so on. With the Special Investment Facilitation Council coming in and finally providing that central leadership to align these policies, these regulations, these rules, such that this can be resolved between the State Bank, the Ministry of IT, the tax and the regulatory authorities, we are beginning to now move towards an environment where these IT companies can bring back their revenue, not just their expenses. And if the expenses stand at $2.6 billion, I think their revenues are twice that much. So the actual IT exports of Pakistan, I think, are around $5 billion, there and thereabouts. Right? And we are hoping that with this enabling environment that the SIFC is working towards and helping provide leadership for, we'll be able to accomplish that shortly. With the freelancers finally being able to fulfill their true potential with all the investments and enabling environment that the government hopes to provide soon, we are hoping to give space to 1 million